हेलो हेलो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको ज्योमेट्री का बेसिक ओवरव्यू दिया। उसका मकसद सिर्फ मेरा ये था बताने का कि आप लोग को ज्योमेट्री जो है थोड़ा सा आपको इमेजिन करनी आ जाए, यानी कि आप लोग बड़े आराम से देख पाओ कि कोई भी अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल अगर होता है तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है और वो ट्रायंगल के अंदर कहाँ पर लाई करते हैं। क्योंकि अगर आपको उनकी पोजिशनिंग अगर समझ में आ जाएगी तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटे, बहुत सारी बातें मैंने बताई थी, 9 पॉइंट सर्कल तक भी हम लोग गए थे, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज थी। आप घबराइएगा नहीं, आप सोच रहे होंगे पहले लेक्चर में सर ने 9 पॉइंट सर्कल तक पहुंचा दिया। मैं सारी बातें आपको बताऊंगा विद देयर प्रूफ्स, जितने भी लेमास हैं, जितने भी थ्योरम्स हैं, सारे रिजल्ट हम लोग करेंगे। तो कुछ छोटी छोटी बातों से लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मेरा सिर्फ मकसद ये था कि आपको दिखाने का कि ज्योमेट्री इतनी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है बेटे, हर एक बात का मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। आवर टॉपिक इज ज्योमेट्री। सो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कुछ बच्चे हैं जो मुझे बताएंगे कि जब मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला तो हो सकता है कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो एक तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी आ जाएगी और बाइसेक्ट भी करेगी। ये स्टेटमेंट ठीक है, गलत नहीं है, मगर मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ ओलंपियाड में आपको वो वाली बात बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है बेटे, सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके बारे में बताना चाहूंगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये एक लाइन ऐसी है हमारे पास कि इसके बाद जितने भी पॉइंट्स अगर होंगे वो सारे के सारे ए और बी से हमेशा इक्वी डिस्टेंट रहेंगे। ठीक है बेटे, यानी कि पी ए वाला जो डिस्टेंस है वो इस वाले डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। इसका अगर आप प्रूफ करना चाहें तो बड़े आराम से प्रूफ भी हो जाता है कि परपेंडिकुलर भी था, बाइसेक्टर भी था। जैसे ये बाइसेक्ट कर रहा है यानी ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर, दिस साइड इज कॉमन, सो बाय एस ए एस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसेस दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट अगर आएंगे तो पी ए जो है वो टी बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटे, यानी कि इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हमेशा ए और बी से इक्विडिस्टेंट रहेंगे। पॉइंट अगर यहाँ पर अगर आ जाए क्यू वाला पॉइंट तो भी ये वाला जो पॉइंट है वो इससे इक्विडिस्टेंट आ जाएगा। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस इज 90 डिग्री, दिस साइड इज कॉमन, तो इसका मतलब ये वाली साइड इससे बराबर आ जाएगी। ठीक है बेटे, नहीं याद रखना, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जितने भी आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हैं, एपीबी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जितने भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे इसका जो ये वाला वर्टेक्स होगा टॉप वाला हमारे पास, अगर बेस अगर ए बी है तो वो हमेशा ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। यानी जितने भी पॉइंट्स ए बी से इक्वी डिस्टेंट होंगे वो सारे के सारे हमेशा ए और बी से इक्वी डिस्टेंट रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि अगर बोला जाएगा कि पी ए बी एंड क्यू ए बी आर द टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती से ऐसे बना देते हैं कि पी ए बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ये ले लिया, ठीक है बेटे, और क्यू ए बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ये ले लिया। ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास पी ए बी और क्यू ए बी दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद द सेम बेस ए बी, ठीक है, देन पी एंड क्यू मस्ट लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अगर आपको दे रखा है कि पी ए बी एंड क्यू ए बी आर द टू आइसोसेलेस ट्रायंगल विद द बेस ए बी, सो दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो पी और क्यू वाले पॉइंट आप लोगों ने जो ऐसे अलग अलग नहीं लेने हैं, पी एंड क्यू मस्ट लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, चाहे वो दोनों सेम साइड पे हो चाहे दोनों अपोजिट साइड पे हो। ठीक है बेटे, सो हम बात कर रहे हैं अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में। तो मैंने कहा इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इससे इक्वी डिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, सो अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास ये है, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये पेपर में है मेरे पास कोई भी, ठीक है बेटे, अगर मैं इस पेपर को फोल्ड करता हूँ, मैंने इस पेपर को फोल्ड किया, हमने कहीं भी उठा करके ये पेपर लिया, इसको हमने फोल्ड कर दिया और एक क्रीज बना दी। ठीक है बेटे, मैंने कोई भी पेपर लिया, उसको फोल्ड किया और उसकी क्रीज बना दी। मैं आपको थोड़ा सा बना कर दिखाता हूँ कि जो क्रीज है वो ये वाली क्रीज है बेटा हमारे पास, दिस इज अ क्रीज। ठीक है, तो जैसे मैंने पेपर को फोल्ड किया था, ये क्रीज अगर मेरे पास आई, ये क्रीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? टेक योर टाइम, फिर आप मुझे बताइए कि जब कभी भी किसी पेपर को हम लोग फोल्ड करते हैं, ये जो क्रीज अगर हमारे पास आती है, ये क्रीज क्या रिप्रेजेंट करती है? कोई बच्चा मुझे बोलेगा हाइपोटेन्यूज बोलेगा, है ना, कोई पूछेगा कुछ और बोलेगा, तो आपको एक शानदार चीज बताता हूँ, देखते हैं ये क्रीज क्या रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने बोला इसका नाम मैंने दे दिया लेट इट बी पी,
इसका नाम हमने दे दिया लेट इट बी क्यू। ठीक है बेटे, जब मैंने इस पेपर को फोल्ड किया था, ठीक है, तो जो ये वाला पॉइंट था लेट दिस बी ए, देखते हैं ये वाला पॉइंट कहाँ जाता है। तो जब फोल्ड किया था तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया था। ठीक है बेटे, और हमने इसको ज्वाइन कर दिया लेट दिस पॉइंट बी बी, और हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यानी कि जब मैंने पेपर को फोल्ड किया था तो जो ए वाला पॉइंट था वो बी पे आ गया था हमारे पास, और हमने ये क्रीज बना दी। मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो पी क्यू है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखते हैं बेटे, हमने पी क्यू को ज्वाइन किया था, मतलब इसको जब फोल्ड किया था, इसको मैंने फोल्ड ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये वाली लाइन सेगमेंट है वो इस वाले लाइन सेगमेंट के बराबर आएगी बेटे। जैसे ही मैंने पेपर को फोल्ड किया था तो इसका मतलब क्या है, पी ए वाली लाइन पी बी के बराबर आ जाएगी। ऐसे जब मैंने इसको फोल्ड किया था, ध्यान से देखते हैं, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो हमारे पास बी क्यू वाली लाइन बी ए के बराबर आ जाएगी बेटे। जैसे ही मैंने पेपर को फोल्ड किया, ये क्रीज अगर मेरे पास आई, मैं कहना चाहता हूँ कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज कॉमन। ये वाली जो साइड है वो हमारे पास कॉमन आ गई। तो इसका मतलब क्या है, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसेस दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ध्यान से देखिएगा, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर आई, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर आई, पी क्यू इज कॉमन, सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसेस ट्रायंगल बी पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी बी। ठीक है बेटे, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अगर होंगे हमारे पास तो इसका मतलब क्या है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर आ जाएगा। जब हमने फोल्ड भी किया था, ऐसा अगर हमने फोल्ड भी किया था तो ट्रायंगल 1 जो है ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट अगर आया था तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ जाएगा बेटे। अब हम क्या करते हैं, मैंने इसका नाम दे दिया लेट दिस बी एम, ये वाला पॉइंट है, इसका नाम मैंने एम दे दिया। ध्यान से देखेंगे, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया था, पी बी इज इक्वल टू पी ए, ये जो लेंथ है वो इस वाले लेंथ के बराबर आ गई, पी बी इज इक्वल टू पी ए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, पी एम इज कॉमन। ठीक है बेटे, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसेस अगेन मैंने क्या बोला, पी बी इज इक्वल टू पी ए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, पी एम इज कॉमन, अगेन पी बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू पी ए एम। ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट अगर आएंगे तो इसका मतलब जो ये वाली लेंथ है वो इस वाले लेंथ के बराबर आ जाएगी बेटे। देख रहे हैं कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, PM is common, so by SAS congruences these two small triangles are congruent, it means BM is equal to ME। साथ साथ हमारे पास क्या आएगा कि जो ये वाला एंगल है हमारे पास वो इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा बेटे, लेट दिस एंगल बी 3 एंड लेट दिस एंगल बी 4। सो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर अगर आएगा हमारे पास तो आपके पास क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो दोनों एंगल्स बराबर अगर हैं तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो एंगल 3 कम्स आउट टू बी 90 डिग्रीज, यानी ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्रीज हो गया। जब भी मैंने पेपर को फोल्ड किया था, ये क्रीज अगर मेरे पास आई थी तो जिस पॉइंट से मैं जिस पॉइंट तक ले जाता हूँ बेटे, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक ले जाता हूँ, ये जो क्रीज है उसको बाइसेक्ट भी करती है, बिकॉज ए एम बी के बराबर आ गया था और परपेंडिकुलर भी थी हमारे पास, दैट इज दिस क्रीज इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। जब कभी भी आप किसी पेपर को फोल्ड करते हैं, जो क्रीज हमारे पास आती है, दिस क्रीज इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर मैं यहाँ पर भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट अगर ले लूँ तो ये भी हमारे पास इससे इक्विडिस्टेंट आएगा बेटे। अगर मैं इसका नाम लेट दिस बी अगर मैं ले लेता हूँ लेट दिस बी टी, तो टी बी जो है वो हमारे पास टी ए के बराबर आ जाएगा। यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का बेसिक मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे एंड पॉइंट से हमेशा इक्विडिस्टेंट आते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज करके देखिए हम लोग ज्योमेट्री में कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँचते हैं। इसके लिए बताना चाहूँगा मैं आपको कि अगर मेरे पास कहीं पर भी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं बेटे, लेट दिस बी ए, लेट दिस बी बी, लेट दिस बी सी। मैंने कहा मैंने कहीं पर भी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स मार्क कर दिए, इसका नाम हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है बेटे, ये ए बी आ गया, ये बी सी आ गया, सी ए आ गया। मैंने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, ए बी का हम लोगों ने बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है बेटे, ए बी का हमने बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखेंगे अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेरे पास है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या था कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास बी और सी से इक्विडिस्टेंट आ जाएंगे बेटे। हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, मैंने इसका दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया ये वाला। ठीक है बेटे, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट फॉर एग्जांपल डी है, हमारे पास ये वाला पॉइंट ई है। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास है
ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। इसके मतलब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे A और C से इक्विडिस्टेंट आ जाएंगे बेटे। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे A और C से इक्विडिस्टेंट आ जाएंगे। अभी हमने बताया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे इक्विडिस्टेंट आते हैं। Similarly, the perpendicular bisector of BC, red line is a perpendicular bisector of BC. That is, all the points on the red line are always equidistant from B and C. Let both these lines, green line and the red line, intersect at a point S. And S is called the circumcenter because now here SB is equal to SC. This distance is equal to this distance because S lies on the red line, which is the perpendicular bisector of BC, and each point on the perpendicular bisector are equidistant from B and C. So SB is equal to SC. Similarly, S lies on the perpendicular bisector of AC. That is, each point on the green line is equidistant from A and C. So what we are having is SA is equal to SC. That is, SA is equal to SC and SC is equal to SB. That is, S is a point which is equidistant from all the three vertices. That is, if I join S, if I take S as a center and SA as a radius, if I draw a circle, it definitely passes through the points A, B and C. Okay. This is called the circumcircle of a triangle ABC. This is called the circumcircle of a triangle ABC. S is called the circumcenter. Okay, and the radius SA or SB or SC, these are called, I am representing this by capital R, and they are called circumradii, a circumradius. Hope it is clear to everyone. If ABC is any triangle, if I draw the perpendicular bisector of BC, perpendicular bisector of AC, they intersect at a point S, and all the perpendicular bisectors are concurrent. That is, if I draw the perpendicular bisector of AB, again it passes through the point S. Okay, I will teach you some basics so that you can know the basic results. Okay. So if I give you one question based on this problem, like if you are having a square sheet, if ABCD is a square, you are having a square sheet, ABCD is a square, okay, you take the midpoint of CD as M. मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगा, how can you get the midpoint? Like in this sheet again, okay, we have drawn this one. If I join this point to this point, if I join the end points again, okay, if I join these 2 points, we will make a crease. Okay, if I join these 2 points, we will make a crease. Now this again it comes out to be the midpoint, because this, if I join this point to this point, if I make this crease, then this crease is a perpendicular bisector of this line segment, and this is a midpoint of the line segment. Okay, so again I had taken the midpoint of this line. I had taken the midpoint of CD. You can say I had just folded the C and D, and I just taken the midpoint M of CD. So what I am doing is, I am just taking the point M to the point B to the point M. मैं क्या कर रहा हूँ कि B वाले पॉइंट को M वाले पॉइंट पर लेके जाऊंगा पेपर को, ठीक है बेटे? When I take B point to the point M, as we fold, we get a crease here. We get this crease. याद रखिएगा, it need not passes through A. Okay, when I join B point to the point midpoint of the CD, okay, then we get this crease. Let this point be P and let this point be Q. Okay, ABCD is given to be a square. You have to find the ratio CP upon PB. Hope it is clear to you. ABCD is a square paper. M is the midpoint of CD. If I take B point to the midpoint of the CD M, and if I draw a crease, okay, if I fold the paper, if I draw the crease, let the crease cut CB at a point P and AD at a point Q. We have to find the ratio CP is to PB. You can take 2 minutes or 5 minutes. Then after the 5 minutes, you can see the solution. Okay, you can pause the video and try to do by yourself. If not, then I am just sharing the solution with you. Okay. So since but I told you that if I take a point B to the M, when I take a point B to the M, and when we take a crease, it means this crease is a perpendicular bisector of BM. This crease is a perpendicular bisector of BM.
It means all the points on the perpendicular bisector are equidistant from B and M. That is, if I join PM, now this point will become this point, because when we fold the paper, then the point B comes to M, that is BP comes to PM, because each point is equidistant from B and M. Okay बेटा, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो पेपर फोल्ड करके ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है? So that PM is equal to PB, and since M is the midpoint of CD, so what we have is it comes out to be A upon 2. The midpoint of, as the side of a square sheet is A, so let this be A by 2, and let this distance be small x. CP is x, then PB comes out to be A minus of x. This distance comes out to be equal to A minus of x. Since PB is equal to PM, so if it is A minus of x, it also comes out to be equal to A minus of x. PM also comes out to be A minus x. Then by using Pythagoras theorem, what we are having is A minus x whole square is equal to x square plus A by 2 whole square. I hope you know the Pythagoras theorem, that is in a right angle triangle. If this is perpendicular, this is base, this is hypotenuse, then hypotenuse square is equal to P square plus B square. Hope it is clear to everyone. Okay, otherwise I will give you the proof of Pythagoras theorem as well. Okay, so here in this right angle triangle, hypotenuse square, that is A minus x square is equal to x square plus A by 2 whole square. So it comes out to be equal to A square minus 5 of AX plus x square is equal to x square plus A square by 4. So just cancelling this x square, what we get is A square minus A square upon 4 is equal to 2AX, that is 3A square by 4 comes out to be 2AX. Since A cannot be 0 because A is the side of a square, so we can cancel out this A, and then x comes out to be equal to 3A upon 8. X comes out to be equal to 3 upon A upon 8. What we need to calculate is we have to calculate CP upon PB. That is, we need to calculate x upon A minus of x. Since we have x here, we can calculate A minus x. So A minus x becomes A minus 3A upon 8. So it comes out to be equal to 5A by 8. Okay. So A minus x is 5A by 8, x is 3A by 8. We need to calculate CP upon PB. It comes out to be x upon A minus of x. So x is 3A upon 8. And A minus x is 5A by 8. We can cancel out A by 8 by A by 8. We get the ratio is 3:5. Okay. And for a particular case, if this is 3, this is 5. If this is 3, this is 5. Total is 8. Okay. This length is 8. And the midpoint is, it comes out to be 4. Okay. This is 3. This is 4. This is 5. This is also 5. And 3, 4, 5 is a Pythagorean triplet. Okay. Hope it is clear to all of you. I will teach you some more basics regarding the circumcenter. We will do some results based on the circumcenter, but before that, I am expecting that you should know a basic trigonometry. Yes, you should know sin theta, cos theta, tan theta basically. Okay, so let us start. If ABC is any triangle, and if we have AD is, if I draw AD perpendicular to BC, okay, in a triangle, you can say in a right angle triangle. If I am considering this as an angle, that you can say ABC is a triangle, right angle at B. If I am considering this as an angle, then the side opposite to the angle chosen is called the perpendicular. If I am considering this angle, let it be theta, then the side opposite to this angle is called perpendicular. This is base and this is hypotenuse. And I think you should know this result. Pandit Badri Prasad upon Har Bole. It is sin theta, Sona Chandi Tole, people say sin theta, cos theta, tan theta. This is cosec theta, this is sec theta, and this is cot theta. That is sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. In a triangle, this sin theta comes out to be equal to perpendicular or hypotenuse upon that is AB upon AC. And cos theta is base upon hypotenuse, that is BC upon AC. And tan theta is perpendicular upon base, that is AB upon BC. Okay. And by that reciprocal, you can calculate the values of cosec theta, sec theta, and cot theta.
This is a basic result. I need that you should know these results in trigonometry. Okay. So now in this case, if this is angle A, this is angle B, this is angle C, the side opposite to the angle A is denoted as small a. The side denoted opposite to angle B is denoted as small b. The side opposite to angle C is denoted as small c. These are the standard notation. The sides should be denoted by small letters A, B, and C, and angle should be denoted by capital letters A, B, and C. So what I am doing is I am just considering sine of B. Sine of B, that is sine of this angle is equal to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse, so it comes out to be AB, AD upon small c. AD upon small c is AB. Okay, I am writing this like this. AD upon AB, which is AD upon small c. Okay, and what we have is sine of C. Sine C is equal to AD upon AC, perpendicular upon hypotenuse, that is AD upon small b. From here we can calculate that AD comes out to be equal to small c sine B. Capital letters are used for the angle, small letters are used for the sides. Okay. Here what we get is AD comes out to be equal to small b sine C. Okay, both are equal to AD. So we can add AD comes out to be equal to, you can say C sine B or B sine C. Is it clear? Or we can add this as small c upon sine C is equal to small b upon sine B. Is it clear to all of you? Okay. Now if I draw the perpendicular here, if I draw for example BE be the perpendicular. If I draw BE as a perpendicular, let us see some more results. Likewise in triangle AEB. In triangle AEB, what we have is sine of A is equal to BE upon AB. It comes out to be BE upon small c. So BE comes out to be small c sine of A. BE comes out to be small c sine of A. Okay. And in triangle BEC, sine C comes out to be equal to BE upon PC. That is BE upon small a. So BE comes out to be equal to A sine C. Okay, beta. Both are equal to BE. Both are equal to BE. So we can write this as BE is equal to A sine C, which is equal to C sine A. Both are equal. So from here we can get A upon sine A is equal to small c upon sine C. This is our equation number 1. You can say this is our equation number 2. So from 1 and 2, we can get an important result, that is A by sine A is equal to B by sine B is equal to small c by sine C. This is called a law of sines. That is, in any triangle, this side small a upon sine of A is equal to small b upon sine of B is equal to small c upon sine of C. And what this whole expression is equal to, I will prove now. Okay, I think you should know degree measure theorem. Okay, so what is the degree measure theorem? Okay, what I am doing is, I am expecting that you should know the basic idea of degree measure theorem as well. Okay, if O is the circumcenter, then this angle BOC is twice of angle BAC. If O is the circumcenter, BOC is twice of angle BAC. This is a simple result. I think you should all know. Okay, what I am doing is, there are the two ways. If I draw the perpendicular from O to the chord, if you draw the perpendicular from the center of a circle to the chord, it always bisects the chord. These are the basic results. You can prove it easily. Okay. So this side is small a. If I draw the perpendicular, it comes out to be A upon 2. This is A by 2. This is capital R. Okay. So this is angle A. This all comes out to be twice of A, and this is A and this is A. Okay. If you tell me, then I will tell you the proofs as well, while they are coming. Okay. If you say, then I will tell you the proofs. Okay. Otherwise, what I am doing is,
This angle is A, this angle is twice of A. If you draw the perpendicular, then this angle, both angles comes out to be congruent. Okay. Now here what I am having is sin of A is comes out to be BD upon OB. That is BD is A by 2, OB is R. That is sin of A comes out to be equal to A upon twice of R. That is A by sin A comes out to be twice of R. A by sin A comes out to be twice of R. That is, this result comes out to be equal to twice of R basically. One more different result I will tell you why it comes out to be twice of R. You can say like here, if ABC is a triangle, okay, if O is a circumcenter, just join CO and produce it to cut the circumcircle at a point D. Just join CO and produce it to cut the circumcircle at a point D. Join BD. Okay. If this angle is A, this angle comes out to be equal to A. Angles in the same segment are equal. These are the basic results of a chapter circle. Okay. BAC is equal to BDC. That is, angles in the same segment are equal. So if O is a center, then CD becomes a diameter, then it is twice of R. And CD is a diameter, it means this angle is 90 degrees. हमने पढ़ा भी था अभी कि in a semicircle the angle in a semicircle, then if CBD is a right angle triangle, the CD is a diameter. As CD is a diameter, then this angle also comes out to be 90 degrees. So in triangle ABC, if O is a center, if I join CO and produce it to cut the circle at a point D, then CD becomes a diameter. So angle CBD becomes 90 degrees, and the side opposite to angle A becomes angle A. That is, triangle CBD is a right angle triangle. So you can see here as sin of A is perpendicular, that is CB, upon hypotenuse, that is CD, and sin of A becomes A upon twice of R. That is, A upon sin A comes out to be equal to twice of R. Basically, it comes in the acute angle triangle. Okay, for obtuse angle triangle, I will tell you another proof as well. As this is for one triangle A is acute angle triangle, and I told you that in an acute angle triangle, the circumcenter lies inside the triangle. What happens if angle A is obtuse? Okay, likewise, in this way, here A is an obtuse angle triangle. Here A is an obtuse angle triangle, and I told you that in an obtuse angle triangle, the circumcenter lies outside the circle. Circumcenter lies outside the circle. If O is a circumcenter, just join CO and produce it to cut the point at a point D. Okay, and join this. If A is an obtuse angle triangle, then O will be the circumcenter. Just join CO and produce it to cut the circumcircle at a point D. Then the CD becomes a diameter, and this becomes a 90 degrees angle, because angle in a semicircle is a right angle. So this is angle A. This side is small a. This is the diameter. This is twice of R. And in a cyclic quadrilateral, what we are having is ABDC is a cyclic quadrilateral, and in a cyclic quadrilateral, sum of opposite two angles is 180 degrees. That is, if this is angle A, then this angle comes out to be 180 minus of A. This angle becomes 180 minus of A. So in triangle CBD, sin of 180 minus of A comes out to be equal to perpendicular, that is CB upon CD, that is A upon twice of R. And sin 180 minus of A is sin of A. It comes out to be A upon 2R. Again, in trigonometry, you can learn that sin of 180 minus angle of A comes out to be sin of A. These are the basic results of trigonometry. So again, what we are having is sin A comes out to be equal to A by 2R. Okay, so what we have this result, this is called a law of sines. That is, in any triangle, this side small a upon sin A is equal to small b upon sin B is equal to small c upon sin C comes out to be twice of R, where R is the circumradius and twice of R becomes the diameter. Hope it is clear to all of you, because I will try some more results based on this. We have derived this result right now. It is A by sin A, B by sin B, small c by sin C is equal to twice of R. Okay, so I am doing one more important result. It is area of a triangle ABC.
area of a triangle ABC is equal to half of BC into AD. You can say area of a triangle ABC is half of BC into AD, and we have derived earlier that sin B was, you can say we have derived that sin B was AD upon small c. Sin B was AD upon small c, and AD comes out to be equal to small c sin B. अभी हमने बेटा derive किया था कि sin B was AD upon small c, and AD comes out to be equal to small c sin B. So if I use this result here, I am representing delta by the area of a triangle ABC. This is half of BC is small a, and AD comes out to be equal to C sin B. This is one of the important result of getting the area of a triangle. It is half of this side into sine of the included angle. This area of a triangle is half of the product of any two sides into sine of the included angle. You can see here as well, because we had derived sin C as in this triangle ADC. Sin C was AD upon small b. Sin C was AD upon small b. That is perpendicular upon hypotenuse. AD comes out to be equal to B sin C. AD comes out to be equal to B sin C. If you use AD result here, then delta becomes half of BC was small a, and AD becomes B sin C. So you can use this result as well. That is area of any triangle ABC is half of this side into sine of this included angle. Okay. Also you can say as area of a triangle ABC. Area of a triangle ABC is equal to area of a triangle ABC. You can write this as half of AC into BE. ठीक है बेटा, और हमने derive किया था sin of A. Sin of A was perpendicular, that is BE, upon hypotenuse, that is BE upon small c. So here BE comes out to be equal to small c sin of A. So if I put BE here, this is half of AC was small b, okay, and BE is small c sin of A. So we get the area as area of a triangle ABC is half BC sin A. Okay, so that is we get area of a triangle ABC is half of the product of any two sides into sine of the included angle. That is half of this side into sine of the included angle. Okay, so we have derived this result. Delta is equal to half of, you can say, BC sin of A. And we know that by using law of sine, A by sin A is equal to B by sin C, sin B is equal to small c by sin C is equal to twice of R. From here, since we know that A by sin A was twice of R, so we can get sin A as A upon twice of R. Okay, we can use sin A here. Delta comes out to be half BC A upon twice of R. That is delta comes out to be ABC upon 4R. This is one of the standard results. Okay, and the circumradii is equal to ABC upon 4 delta. That is in any triangle. If the sides are ABC, you can calculate delta by Heron's formula. You can easily calculate the delta by Heron's formula. You should know the Heron's formula. That is square root of S minus of A, S minus of B, S minus of C. If you know, then it's okay. Otherwise, I will give you the proof. But S is a semi-perimeter. That is, if you are having the sides of a triangle as small a, small b, small c, then area of a triangle is given by square root of S, S minus of A, S minus of B, S minus of C, where S is equal to A plus B plus C by 2. These are basic results of circumcircle. Okay, these are standard results. I will teach you some more results. Okay, with the basics. Thank you.